Namaskar. Welcome to our platform, the Classroom Study. In this video, we will discuss the minimal polynomial. Before going to this particular topic, let us discuss some fundamental and two key concept for the polynomials. The first one is whenever we have a polynomial fx, then we can always write in the form that x naught a naught x to the power n plus a 1 x to the power n minus 1 plus and so on plus a n minus 1 x plus a n. Okay. The moment this a naught is not equal to 0. Okay. So if this a naught is not equal to 0, then this says that degree of दिस पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एन. तो ए नोट का नॉन जीरो होना विल डिसाइड कि एक्स एफ एक्स का डिग्री एन है. वॉट एवर द लार्जेस्ट पावर दिस एक्स हैज दैट विल बी द डिग्री ऑफ एन इन केस व्हेन इट्स कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ द कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन we can think about division of this fx by a naught. So let us call this new polynomial as gx. So gx will be a naught over a naught x to the power n plus a1 over a naught x to the power n minus 1 plus and so on plus a n minus 1 a naught x plus a n a naught, right? Now let me write these each coefficient of polynomial gx in form of b. So this will be 1. So let me point out this 1 x to the power n plus, suppose I am calling this b1. b1 is a1 upon a naught x to the power n minus 1 plus and so on. This is bn minus 1 x and plus bn. So this is how you can represent these gx in form of the bi's coefficients. Now one thing that we must notice is the coefficient of the highest power of x is 1, and this is the case where we are going to define a new thing. This 1, whenever this leading coefficient, or let me point out in the previous one that whenever this a naught is not equal to 0, then this a naught is said to be the leading coefficient of fx. Okay, when we divide this fx by a naught, now the leading coefficient is 1. Okay, so now the leading coefficient is 1, and in this case this, whenever the leading coefficient is 1, then whatever the polynomial is, that is known as monic polynomial, and in this case gx is said to be a monic polynomial. ओके, तो कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसका लीडिंग कॉफिशिएंट 1 है उसको हम मोनिक पोलिनोमियल बोलेंगे. और लीडिंग कॉफिशिएंट से हमारा मीनिंग है कि x टू द पावर n, और n यहाँ पर लार्जेस्ट पावर होना चाहिए, उसका नॉन जीरो कॉफिशिएंट, दैट विल बी आवर लीडिंग कॉफिशिएंट. तो ये बात हुई मोनिक पोलिनोमियल की. नाउ आई टोल्ड यू कि हमें दो कंसेप्ट सीखने हैं मिनिमल पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले. सो द सेकंड concept is about characteristic polynomial. So whenever we have a linear operator t from v to v, so we can talk about the characteristic polynomial of t. एंड जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात करेंगे तो एक थ्योरम जो हमारे दिमाग में आती है वो है केली-हैमिल्टन थ्योरम. एंड केली-हैमिल्टन थ्योरम सेज कि ये t, that is a linear operator, always satisfy its characteristic polynomial.
ठीक है. So we define that this characteristic polynomial is f of t. So the moment we say that f this t satisfied this f t, that means, and Cayley-Hamilton theorem says दैट जब भी हम इस स्मॉल टी को अपर केस टी से रिप्लेस करेंगे तो हमेशा ये एक ज़ीरो लीनियर ऑपरेटर बनेगा. ठीक है. वेयर टी नॉट इज द ज़ीरो लीनियर ऑपरेटर. Okay, that is T naught on V will be equals to 0 vector for all V belongs to V. कोई भी वेक्टर हो उसकी T नॉट इमेज हमेशा 0 पर ही जाएगी. कोई भी ऐसा पोलिनोमियल, ऐसा लीनियर ऑपरेटर जिसके लिए हर एक वेक्टर की इमेज 0 पर जा रही है, तो उस पर्टिकुलर लीनियर ऑपरेटर को हम 0 वेक्टर ही बोलेंगे, 0 ऑपरेटर ही बोलेंगे. ठीक है. अब क्योंकि एफ टी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है किसी टी के लिए. ओके. सो लेट फॉर सम टी our characteristic polynomial f of t is equal to t minus 2 square t minus 3 to the power, suppose we have 1. ओके. अब हम ये कह रहे हैं कि हमेशा इस लीनियर ऑपरेटर के लिए देन always f of t that is equal to t minus 2i square and t minus 3i to the power 1 that will always be equal to t naught. ये हमेशा कैली-हैमिल्टन थ्योरम से ट्रू है. बट ऐसा भी तो पॉसिबल है that we define as gt, suppose g1t that is g minus 2 and g minus 3. हमने ऐसा डिफाइन किया, और हो सकता है हमने g2t ऐसा भी डिफाइन कर दिया. ओके, लेट मी टेक द पावर ऑफ दिस t minus 3 is suppose 4. ओके, द पावर ऑफ दिस इज 4. नाउ we choose t minus 2 to the power 2 and t minus 3, or we choose g3 as t minus 2 then t minus 3 square. इस तरीके से हमने सारे कॉम्बिनेशन बना लिए जो भी पॉसिबल है. ठीक है. हमने क्या किया, हमने इस g1t में जब हमने कैपिटल T से रिप्लेस किया तो हमें एक लीनियर ऑपरेटर मिलेगा. ओके. लीनियर पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल में जब हम लीनियर ऑपरेटर को इनपुट देंगे तो जो भी रिजल्टेंट पॉलिनोमियल आता है अपर केस T में वो एक लीनियर ऑपरेटर होगा. ठीक है. तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग कि g1 अपर केस t एक लीनियर ऑपरेटर है. तो इट मे बी पॉसिबल कि हमने जब यहाँ इसके लिए जब g1 अपर केस t आइडेंटिफाई किया तो हो सकता है हमें ऐसा मिला हो 2i t minus 3i and this is suppose not equals to t naught. We then go to z2 and this gives us t minus 2i square then t minus 3i, and suppose this is also not equals to 0, and in the process you got a z3t for which t minus 2i and t minus 3, okay, this is uppercase t minus 3i square. Now this is equals to 0. okay, तो आपने क्या किया कि यहाँ से हमने इनकी पावर्स को इंक्रीज करते गए, और वो पहला पॉलिनोमियल पावर्स में जिसके लिए हमें रिजल्टेंट लीनियर ऑपरेटर टी नॉट मिल रहा है. सो वी विल फोकस ऑन दिस लीनियर ऑपरेटर नाउ, एंड जिस स्मॉलेस्ट पावर्स के लिए इंक्लूडिंग द ईच फैक्टर, क्योंकि हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हमें आइगन वैल्यू देता है, तो हमें इनको इंक्लूड करना है. इंक्लूडिंग द ईच फैक्टर हमें वो पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है जो कि स्मॉलेस्ट
यहाँ पर एक्सपोनेंट्स रखता हो, स्मॉलेस्ट पावर्स रखता हो, और जिस स्मॉलेस्ट पावर्स के लिए हमें पॉलिनोमियल मिल रहा है, और उस पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल के लिए अगर रिजल्टेंट लीनियर ऑपरेटर टी नॉट बन रहा है, तो हम इस G3T टाइप के पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। सो मिनिमल पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जो कि लिस्ट डिग्री वाले पॉलिनोमियल है जिनके लिए जी नोट टी नोट हमें मिल रहा है। ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द मिनिमल पॉलिनोमियल. So let me write the definition of minimal polynomial. Definition, and this definition will define, of course, the minimal polynomial. Okay, so let T be a linear operator, defined on a finite dimensional vector space V. ठीक है। a polynomial small p t, okay, that is pt, is said to be a minimal polynomial of the linear operator t if, now we are writing the two conditions that has to be satisfied by this pt. So first condition says that if this pt is monic polynomial, now monic polynomial, that means कि pt का leading coefficient 1 होना चाहिए. And what about the b part? B part says that this polynomial pt है ना, that the polynomial pt is the least degree polynomial for which p of uppercase t is equal to this t naught. T naught is our zero linear operator. Okay, तो कोई भी पॉलिनोमियल जो किसी लीनियर ऑपरेटर के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है उसे हम मिनिमल पॉलिनोमियल कहते हैं. ठीक है। जैसे जैसे हम थ्योरम्स और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, वैसे वैसे हमें ये और अच्छे से समझ में आता जाएगा. नाउ लेट मी राइट अ थ्योरम that give a more interesting way to understand the minimal polynomial. So let me write the theorem 7.12. Okay, and this theorem says let this pt be the minimal, now let me point out this, okay, be the minimal polynomial of a linear operator t on a finite dimensional vector space that is V. ठीक है। Then its A part says for any polynomial z of t, if this t satisfied g, that means g of uppercase t is equal to t naught, then we will conclude that this pt divides gt. Okay,
अब हम ये कह रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल को ये टी सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड करने का मतलब है इज रिजल्टेंट लीनियर ऑपरेटर जीरो ऑपरेटर आ रहा है, तो उस केस में हमेशा मिनिमल पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। बट हमें केली हैमिल्टन थ्योरम से तो ये पता ही है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को तो हमेशा ही लीनियर ऑपरेटर सेटिस्फाइड करेगा। तो इन पर्टिकुलर हम क्या कहना चाह रहे हैं, इन पर्टिकुलर we can say that this pt divides the characteristic polynomial of t. So this is a important conclusion from the a part, and b part says the minimal polynomial minimal polynomial of t is unique, always unique. Okay, now let me write the proof. So proof contains two part. Let me point out each one. एक पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि सम पोलिनोमियल डिवाइड्स सम अनदर पोलिनोमियल। हमने हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पर हमने कहा कि व्हेन एवर वी वांट टू शो दैट ए डिवाइड्स बी, और इस तरीके का जब भी कंसेप्ट आता है वी ऑलवेज यूज division algorithm. That means we identify some q and r such that b can be written as a q plus r. Now this r is remainder, this q is quotient. तो हमें अगर ये शो करना है that a divides b, तो इस केस में our target is to show that r is equal to 0. In case where we are able to prove that this r is equal to 0, then this will implies that a divides b. So this is going to be used in the part a, proof of part a, and for the part b we know the uniqueness. हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की यूनिकनेस प्रूफ की है, हमने लिमिट की यूनिकनेस प्रूफ की है, हमने कुछ जैसे इन्वर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, सपोज हमने इन्वर्स है ना, उनकी भी यूनिकनेस प्रूफ की है। इन केस जब भी हमने आइडेंटिटी के बारे में बात की तो हमने E1 और E2 दो आइडेंटिटी को सपोज किया। जब हमने लिमिट की बात की तो वहाँ पर हमने L1 और L2 दो लिमिट को सपोज किया था। और जब हमने किसी एलिमेंट A के लिए ग्रुप थ्योरी में अगर इन्वर्स की बात की, हमने कहा दो इन्वर्स है B1 और B2, और एट लास्ट हमने हमेशा ये प्रूफ किया दैट E1 इज इक्वल टू E2, दिस L1 इक्वल टू L2 एंड दिस B1 इक्वल टू B2। ये हमने प्रूफ किया, एंड द मोमेंट वी आर एबल टू प्रूव फॉर एवरी E1 E2 L1 L2 और B1 B2, अगर हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि ये सभी इक्वल, इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटी यूनिक ही है। तो ये यूनिक का एक जनरल मेथड है जब भी हमें यूनिकनेस प्रूफ करनी है। सो दिस process will be used in the proof of B part. Now let me write the part A first. So for the part A, we need to assume a polynomial that is given to us gt, which is satisfied by t. So let gt be a polynomial such that g of t equals to t naught. This is our first conclusion. Also pt is the minimal polynomial of t. So we will have that p of t is equal to t naught, and pt is monic and least degree polynomial, least degree polynomial for which this, suppose this is 2 happens। ठीक है, ये दो बातें हमें गिवन है। अब हमें ये शो करना है कि पी टी डिवाइड्स जी टी। ओके, सो नाउ फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम
algorithm, we can have polynomials qt and rt such that this gt can be written as qt times our polynomial pt plus rt. ओके, वेयर अब हम किसी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल से तो हमेशा कम ही होगी. वेयर डिग्री ऑफ दिस rt is strictly greater than degree of pt, क्योंकि ये pt से ही हम डिवीजन की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज आवर कंक्लूजन नंबर. Suppose this we are calling 3 and this is 4.